Hello, I am Pramod Kumar. Today we will study English for class 12 Bihar board. Our book is Rainbow Part 2 and the poem is Snake, written by D.H. Lawrence. In this poem, first of all we should know something about D.H. Lawrence. D.H. Lawrence was a poet, novelist, short story writer, essayist, and during his initial years, he grew up in a strife. What was the strife? On the one side was his mother, who was educated, gentle, sophisticated, on the other hand was his father. He was a miner, खान में काम करने वाला, and he was coarse, means rough, not sophisticated. He grew in initial years under this strife. Strife means conflict. Mother was educated, gentle means sophisticated. Father was a miner, खान में काम करने वाला, and coarse, he was rough. But as he grew in maturity, he started disliking the gentleness of his mother and started liking earthiness. What is earthiness? Who is attached to the ground, who is close to the ground. So see, initial year what happens? His mother is educated, gentle means sophisticated. Father is a miner, खान में काम करने वाला, coarse, rough. He is not sophisticated. So he likes his mother, dislikes his father, likes mother's gentleness, dislikes father's coarseness. But as he grows in maturity, जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाता है, D.H. Lawrence, he starts disliking his mother's gentleness and liking his father's earthiness. Earthiness means close to the ground, close to the actual hard, harsh realities of common life, right? In this poem, the snake, what does he say? He exalts the values of primitive life. Exalt means respectful way में दिखाना, glorified way में दिखाना, dignified way में दिखाना. He exalts the values of primitive life and denounces the shams and artificialities of modern civilized life. What are shams? Sham means दिखावा, show off. Sham, दिखावा, in which falsity is more and truth is much less. दिखावा. Exalts the values of primitive life. Primitive means पुराने जमाने में जैसे रहते थे. And denounces. Denounces मतलब जिसको इनकार करना, जिसको रिजेक्ट करना, denounces the shams and artificialities. What is artificialities? Artificialities मतलब कृत्रिमता, not natural. Not natural. Artificialities of modern civilized life. आधुनिक जो सभ्य जीवन हमारा दिखता है, उसके जो शैम और आर्टिफिशियलिटीज हैं, उनको डिनाउंस करता है पोएट इस पोएम में, राइट? So we will go ahead.
it's a very hot day in July, in the month of July, and the poet is in Sicily. Extremely hot day, very hot day in Sicily. The poet feels very hungry, takes his water bottle, comes out of his house to collect drinking water. So what does he see? He sees that already a large snake is there to quench its thirst. एक बड़ा सा सांप ऑलरेडी वहां पे गोल्डन कलर का ऑलरेडी वहां पे है, जो नल के पास जहां से पानी गिरता है वहां पानी पीने के लिए वो बैठा हुआ है. तो पोएट अपने रास्ते में पानी का बोतल लिए हुए रुक जाता है. बिकॉज इन यूरोपियन कंट्रीज people are very civilized. If somebody is ahead of me, I will give that person priority before me. They are very civilized. So he gives the snake priority over himself. Why does he give priority? Because the snake came first and poet came second at the source of the water. So the poet started, and this poem was written during a stay at Taormina, Sicily. The poet was staying in Sicily in 1923. That time he wrote this poem. This poem explores the relationship between humans and one of the most feared reptiles on earth. What is one of the most feared reptiles on earth? A venomous snake, एक जहरीला सांप, right? And the main theme of this poem is the ongoing conflict between humans and nature. The snake here represents nature, प्रकृति को represent करता है snake. So दोनों के बीच जो conflict चलते रहता है मानव जाति के बीच और प्रकृति के बीच, उसको ये poem दर्शाता है, right? Lawrence and D.H. Lawrence and his wife led a restless nomadic life together. Restless, बेचैन, nomadic. आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों वहाँ. Nomadic life. Moving from one country to another over 18 years. लगभग अपने जीवन के 18 साल वो लोग एक देश से दूसरे देश से तीसरे से चौथे देश घूमते रहे. Cornwall, Italy, Germany, Sri Lanka, Australia, the USA. They went to all these places. And during all this traveling, Lawrence used to publish his books and used to live a frugal existence. Frugal existence means बहुत कम पैसों पे जीना. For most of his life, अपना जीवन का अधिकांश समय उन्होंने बहुत कम पैसे में जीवन करके निकाला. Until he succumbed to TB in France in 1930. और अंत में ट्यूबरक्लोसिस से फ्रांस में उनकी 1930 में दुखद मृत्यु हो गई. Right? So we start the poem. The poem goes like this. A snake came to my water trough on a hot day, and I in my pajamas for the heat to drink there. इनका जो water trough था, water trough means वाटर ट्रॉ, एक कंटेनर फॉर एनिमल्स टू ईट एंड ड्रिंक फ्रॉम. एक पानी का बर्तन रहता है जिसमें चिड़िया या एनिमल्स के लिए रखा रहता है, वो उसमें से पीते हैं. सो इट वाज ए वेरी हॉट डे. द पोएट वाज इन हिज पैजामास एंड ड्यू टू हीट, एक्सट्रीम हीट, एंड ही केम टू ड्रिंक वाटर. सो in the deep strange scented shade of the great dark carob tree, there was a very large dark carob tree. In that shed, I came down the steps with my pitcher. घड़ा लेके वो सीढ़ी उतर रहा था पोएट. And must stand and wait, for there he was at the trough before me. पानी का जो साधन रखा हुआ था वहाँ पे ऑलरेडी कोई था.
इसीलिए पोएट बोलता है कि आई मस्ट वेट बिकॉज ऑलरेडी देयर वाज समबडी बिफोर मी, मुझसे पहले ऑलरेडी वहां कोई था। ही रीच डाउन फ्रॉम ए फिशर, फिशर मीन्स दीवार में या लकड़ी में या पेड़ में कोई छेद हो छोटा सा, उसमें से दरार हो, दरार उसमें से वो निकले। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom, मिट्टी की एक दीवार थी, उसमें से एक दरार में से वो निकला। And trailed his yellow brown slackness, soft bellied down. Its belly, which was touching the ground, was very very soft, and it was yellow brown color. Over the edge of the stone trough, water trough was made of a stone, and it was lying there, and rested his throat upon the stone bottom. A stone bottom, the stone trough bottom from where the water seeps, it was rested his throat, अपने गर्दन को वहां रखे हुए था पानी पीने के लिए। And where the water had dripped from the tap, नल से जहां पे कुछ पानी चुआ हुआ था, in a small clearness, एकदम साफ छोटा सा पानी का ये था, ढेर था छोटा सा, उसमें से नल में से चुआ हुआ। He sipped with his straight mouth, अपने सीधे मुंह से वो पानी पी रहा था। Softly drank through his straight gums, एकदम सीधे गम्स से वो straightly पी रहा था, softly धीरे धीरे। Into his slack long body, slack long body में वो अपना पानी को अपने गम्स के थ्रू पास कर रहा था, silently, बिना कोई आवाज किए। Someone was before me at my water trough, and I, like a second comer, waiting. कोई मेरे water trough पे already था पहले से, and since I came second, I was waiting. He lifted his head from his drinking, and as cattle do. पानी पीते पीते उसने अपना सिर उठाया स्नेक ने, जैसे कि मवेशी करते हैं, cattle do, and looked at me vaguely. और वेगली मेरी तरफ देखा, वेगली मतलब नॉट वेरी क्लियरली। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसे पानी पीते समय मवेशी वेगली अपना सिर उठा के ऊपर सामने देखते हैं, वैसे देखा। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोर्क्ड टंग, टू फोर्क, सांप के जीभ में वो ऐसे फोर्क रहता है, टू फोर्क टंग फ्रॉम हिज लिप्स, एंड म्यूज्ड ए मोमेंट, म्यूज मतलब जैसे कोई सोचता है, कोई ध्यान लगाता है फॉर ए मोमेंट, वैसे। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, और झुक गया, थोड़ा और पिया पानी। बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बावेल्स ऑफ द अर्थ, जुलाई का महीना था, इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट, सो बर्निंग बावेल्स ऑफ द अर्थ, जमीन का जो पेट है वो जल रहा था, जल रही थी गर्मी से, उसके कारण वो अर्थ ब्राउन कलर का, अर्थ गोल्डन कलर का हो गया था। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग, इट वॉज ए जुलाई डे वेरी हॉट इन सिसिली। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, ही मस्ट बी किल्ड। नाउ द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द वॉइस ऑफ एजुकेशन। What is voice of education? Whatever we are taught since our early childhood, and which gets into our mind, psyche, our knowledge, information, is called voice of my education. So what we are taught, that if you see a snake, particularly a venomous snake, you must kill it. That is what we are taught. Are we taught to play with snake? No, we are taught to kill the snake when we see it. So the voice of my education said to me, he must be killed. The poet says, मुझे आज तक जो सिखाया गया था उसके अनुसार मुझे उस स्नेक को तुरंत मार देना चाहिए था। For in Sicily, the black snakes are innocent, the gold are venomous. सिसिली में ऐसा माना जाता है कि जो काले कलर के सांप होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, लेकिन जो गोल्ड कलर के होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं। और यहाँ पोएट को जिस सांप से मुलाकात हुई थी वो
गोल्ड कलर का था, सो इट इज प्रिज्यूम्ड, पोएट को जो बचपन से सिखाया गया था उसके हिसाब से वेनोमस स्नेक था, जहरीला, जिसे उसको तुरंत मार देना चाहिए था। एंड वॉइसेज इन मी सेड, इफ यू आर ए मैन यू वुड टेक ए स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। और पोएट के अंदर में आवाजें उठ रही थी कि अगर तुम एक पुरुष हो, मीन्स हिम्मत वाले आदमी हो, तो तुमको एक छड़ी उठानी चाहिए और उस सांप को ब्रेक कर देना चाहिए, फिनिश हिम ऑफ, मार देना चाहिए। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन पोएट बोलता है बट मस्ट आई कन्फेस, आई मस्ट कन्फेस दैट आई लाइक्ड हिम व्हेन आई सॉ हिम। पोएट को वो बहुत अच्छा लगा स्नेक जब उसने देखा उसको। हाउ ग्लैड आई वाज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट। द पोएट सेज आई वाज वेरी ग्लैड कि इतने शांति से वो मेरे गेस्ट की तरह आया था। टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रॉप, मेरे वाटर ट्रॉप पे वो पानी पीने आया था शांति से, एक गेस्ट की तरह। एंड डिपार्ट पीसफुल, पैसिफाइड एंड थैंकलेस into the burning bowels of this earth। और पोएट को ऐसा लगा कि वो पानी पीने के बाद सेटिस्फाइड होके धीरे से शांति से जिधर से आया है उधर धरती की गोद में वो चला जाएगा। Was it cowardice that I dared not kill him? Then the poet is asking himself, क्या मैं कायर था जो मैंने उसको मारा नहीं? Was it perversity? Perversity means immoral behavior। Was it perversity that I longed to talk to him? क्या ये मेरा immoral behavior था कि मैं उससे बात करना चाहता था? Was it humility to feel so honored? क्या ये मेरी विनम्रता थी कि मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा था उस स्नेक को अपने दरवाजे पे देख के। I felt so honored। The poet says the poet felt very honored by all this, that snake coming to his water trough very silently, drinking water very silently, satisfying himself under such heat, and the poet found himself very honored। And yet those voices, if you are not afraid you would kill him, लेकिन पोएट के बैक ऑफ द माइंड में फिर से आवाज आ रही थी कि अगर तुम मुझसे डरते नहीं हो तो जरूर उसको मार दोगे। ये क्या था? द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन। बचपन से उसको जो सिखाया गया था, जो पढ़ाया गया था, जो बताया गया था, उसके अनुसार उसके माइंड में आवाज आ रही थी कि अगर तुम डरपोक नहीं हो तो उसको मार दोगे। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर। पोएट सेज ही वॉज वेरी अफ्रेड एंड मोस्ट अफ्रेड, बहुत ज़्यादा भयभीत था, बहुत ज़्यादा। बट इवन सो, डिस्पाइट दैट, जितना अफ्रेड था उससे ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहा था पोएट। पोएट जो है जितना अफ्रेड फील कर रहा था उससे ज़्यादा अपने आप को ऑनर्ड फील कर रहा था। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी। ऑनर्ड फील कर रहा था ज़्यादा किस लिए? कि वो स्नेक जो है इसका होस्ट गेस्ट बन के आया था, एंड इसकी हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी मीन्स ट्रीटिंग somebody else as a guest। I am the host, so the guest has come for my hospitality। So the guest was the snake here and expecting hospitality from the poet। From out the dark door of the secret earth, it had, the snake, the guest of the poet had come from the dark of the secret earth। From where it had come it is not known, so it is secret। He drank enough, बहुत सा पानी पिया, and lifted his head, अपना सिर उठाया, dreamily, as if वो सपना देख रहा हो, as one who was drunken, जैसे किसी ने खूब पी रखी हो, नशे में हो, and flickered his tongue like a forked knife on the air, so black, और अपनी जीभ उसने लपलपाई, like a forked knife on the air, so black, काली जीभ। seeming to lick his lips, ऐसा लगा कि वो अपनी ब्लैक जीभ से अपने होठों को पोंछ रहा हो, पानी लगा हुआ।
and looked around like a god. और चारों तरफ सिर घुमा के देखा, लगा कि गॉड जैसे देखते हैं वैसे. अनसीइंग, देख रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो कहीं देख नहीं रहा है. इनटू द एयर, जैसे हवा में देख रहा हो, किसी खास व्यक्ति वस्तु को नहीं. एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और धीरे से उसने अपना सिर घुमाया. एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस ए ड्रीम, और धीरे, बहुत धीरे, जैसे कि वो एक एक करके 3 बार सपने में चला गया हो. Proceeded to draw his slow length curving round. He was sitting in a curve, forming a curve with his body, and now he started to proceed by drawing his length, which was curved, and climb again the broken bank of my wall face. और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा. And as he put his head into that dreadful hole, जिस दरार में से निकला था उसमें उसने अपना सिर डाल दिया. एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप, और जैसे जैसे आगे बढ़ा, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स. स्नेक ईजिंग मतलब ईजिंग इन द मैनर ऑफ ए स्नेक. स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स, कंधे को आसान बनाए अंदर जाने के लिए. एंड एंटर्ड फार्दर, दरार में और अंदर गया. ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole. जब पोएट ने देखा कि वो दरार में घुस रहा है, तो एक हॉरर उसके ऊपर आया, पोएट के ऊपर एक भय का सेंस आया, और एक प्रोटेस्ट. Why I am allowing him to escape, deliberately going into the blackness. पोएट को लगा कि वो तो अपनी इच्छा से एकदम अंधेरे में जा रहा है. and slowly drawing himself after, और वो आगे चलता जा रहा है. Overcame me, now his back was turned. Now that the back of the snake was turned towards the poet felt horror कि वो तो अपनी इच्छा से आगे बढ़ते जा रहा है, जाते जा रहा है. I looked round, मैंने चारों तरफ देखा. And put down my pitcher, अपना घड़ा नीचे रखा. I picked up a clumsy log. It was not a well done log, piece of wood, and threw it at the water trough with a clatter. और जिधर स्नेक जा रहा था उधर इस लकड़ी के टुकड़े को पोएट ने फेंका. आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम. पोएट को लगा कि उस लकड़ी से उसको चोट नहीं लगी. बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, दरार से बाहर जो उसके शरीर का पीछे का अंग था, कन्वर्ज्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट. कन्वर्ज मीन कांपना, हिलना, थरथराना. अनडिग्निफाइड हेस्ट, रिदड लाइक लाइटनिंग. दर्द में आदमी शरीर को तो मरोड़ता है, इधर उधर करता है, वैसे किया. एंड वाज गॉन, और फिर गायब हो गया. इनटू द ब्लैक होल, काले दरार में. द अर्थ लिप्ड फिशर इन द वॉल फ्रंट, एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टेयर्ड विद फैसिनेशन. Even after the snake had disappeared in the fissure, darar, the poet was still looking fascinated towards where the snake had gone, and immediately I regretted it. तुरंत पोएट को रिग्रेट हुआ. I thought how paltry, how vulgar, what a mean act. The poet felt very regretful, very shameful, very embarrassed at what he had done. What he had done? After the snake was halfway through in the fissure and his back was towards the face of the poet picked up a piece of log and threw it at him, which hit the snake. So he felt very bad, very regretful, very ashamed, very embarrassed. I despised myself. The poet felt very embarrassed, very bad, very low for himself, and the voices of my accursed human education. And he was feeling bad for the education that he had got. What was the education we had got? That when you see a venomous snake, you should kill it, right? So he was feeling bad for that kind of education. And I thought of the albatross, and I wished he would come back, my snake. Now he thinks of albatross and wishes that the poet's snake comes back. For he seemed to me again like a king. To the poet, that snake seemed to be like a king in exile. एक वैसा राजा जो देश निकाला हुआ है.
uncrowned in the underworld. Underworld means under the fissures of the earth, under the bowels of the earth, now due to be crowned again. So the poet felt that it's like my snake is like a king in exile. Means it's a king, but in exile the kings don't get due respect. So this snake also doesn't get due respect. And so I missed my chance with one of the lords. Then the poet says, I missed my chance with one of the lords. He is calling that snake lords of life, and I have something to expiate. Expiate means to accept punishment for sin. What sin he had committed? Of hitting the snake when his back was turned towards the poet. And I have something to expiate, a pettiness. And for what does he expect to expiate? To accept punishment for sin? Pettiness. Pettiness means a small, mean, lowly action. What was that action? Throwing a piece of wood at the back of the snake and hitting him. So this is all about the poem. In case of any difficulty, please do approach me on my email ID, which will be there at the thumbnail to the video. And it exalts the values of primitive life and denounces the shams and artificialities of modern civilized life and the conflict between humans and the nature. Thank you very much.